we're defining declare e dot insert exception pragma exception init. Okay, so here when you are trying to insert a record into the department table, it is generating an exception. Okay, तो यहाँ पर ये जो e insert exception है, ये exception का नाम है. तो exception तो एक्सेप्शन का जो नाम है ई इंसर्ट एक्सेप्शन है. तो एक्सेप्शन जो कैटेगरी है वहां पर जो एक्सेप्शन कोड है यहाँ पर डिफाइन किया गया -01400. So now when you are trying to insert a record, when e.exception then insert operation failed, then it is showing you the SQL error. डिस्प्ले नहीं आ रहा कुछ. हाँ क्या है? डिस्प्ले नहीं आ रहा था सर. स्क्रीन शेयर है नहीं सर. डिस्प्ले आया देखो. नहीं सर, अभी कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन है. अभी आया? हाँ जी अब आया सर. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो e.insert exception डिफाइन किया गया है, ये एक्सेप्शन का नाम है. देन एक्सेप्शन कीवर्ड है. एक्सेप्शन को डिफाइन करने के लिए एक्सेप्शन डिफाइन किया गया. फिर जब एक्सेप्शन जनरेट होगा तो एक्सेप्शन कोड को डिस्प्ले करने के लिए pragma exception init यूज किया जाता है. सो दिस इज अ मेथड इज यूज टू जनरेटिंग द एक्सेप्शन कोड. तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट का कमांड लिखा. अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक्सेप्शन शो करेगा इंसर्ट ऑपरेशन फेल्ड. अभी देखो क्या आ रहा है. तो ORA0140 तो आपका जो एक्सेप्शन है कैन नॉट इंसर्ट नॉल इनटू HR.department टेबल इन डिपार्टमेंट नेम. ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर शो किया. ओके समझ में आया? It is the error operation. It is showing you that it is restricting you to insert a null value into the table. सर ये आपने सेकंड जो आउटपुट में जो लिखा है SOLERRMM, ये क्या चीज है? ये जो आपको दिखा है ना इंसर्टिंग नॉल वैल्यू, मतलब जो एक्सेप्शन आप डिफाइन किए हो वो एक्सेप्शन किस लिए है. तो एक्सेप्शन का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन SQL एरम में शो करेगा. समझ में आया? अच्छा. तो SQL यहाँ पर दिखा है ना कैन नॉट इंसर्ट द नॉल वैल्यू. डिफाइंड कोई कीवर्ड है मतलब PLSQL के अंदर? हाँ, इट इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड. We show the SQL नंबर और जो SQL जो एक्सेप्शन का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो करेगा, इसलिए एक्सेप्शन अराइज हुआ. ओके समझ में आया राहुल? यस सर. ओके तो व्हाट इज दैट? तो आप बोल रहे हो SQL एरम क्या है? फंक्शन फॉर ट्रैपिंग द एक्सेप्शन. वन इज SQL कोड, it return the numeric value for the error code. Another is SQL eram, it return the message associated with the number. ओके जो नंबर आप पास किए हो उस नंबर में क्या मैसेज, प्री डिफाइंड मैसेज वहां पर प्रेजेंट है.
वो मैसेज शो करने के लिए एसक्यूएल एरर यूज किया जाता है। और एक होता है एसक्यूएल कोड, जैसे कि -0140 जो पास किया गया, दैट इज ए एरर। These are the two functionality, SQL code and SQL error. Now here it shows something 0, no exception encounter. If there is no exception, then it is a 0. 1 means a user defined exception. 100 means no data found exception. Okay. If any negative number, another Oracle server error number. Okay, अगर 0 होता है no exception occur. 1 रिटर्न अगर करता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। 1 से मतलब 100 से ज्यादा जो वैल्यू आप पास करोगे एरर कोड, दैट इज ए नो डाटा फाउंड एक्सेप्शन। अगर नेगेटिव होगा तो दूसरा कोई एक्सेप्शन होगा, मतलब इसको छोड़कर जो दूसरा एक्सेप्शन होगा। Then trapping the user defined exception. So first you have to define an exception, declarative section, name of the exception. Range, it is a executable section. Reference, it is used to handling the exception section. First you have to declare the exception, then raise the exception, मतलब आप exception generate करोगे, उसके बाद आप exception handle करोगे, that is a raise exception. So trapping the user defined exception. So how you have to define the user defined? राहुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं सर, देखा जाओ। सर अभी नहीं है, सब आ गई है। Now check. चला? शुभम दिखाओ जी। Okay, so now it is visible though. Yes sir. Now department number is 500. V underscore number is testing. Okay, it is a user defined exception. Okay, the past we are defining a department number is 500. V underscore name is testing. Then E dot invalid number. Okay, we are passing a invalid number. That is exception. Means we are defining exception. आप हम खुद exception define किए हैं. तो exception का नाम है E underscore invalid underscore department exception. Now यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, update HR dot department
set department underscore name equals to v name, where department id equals to v dot department number. Okay, so now we are trying to update the department table. If SQL dot not found, then raise an invalid department. Okay, if you are not found any record, if you want to update a record and if that record is not present, suppose यहाँ पर हम department number पास कर रहे हैं 500, अगर आपका 500 नहीं है तो आपको दिखाएगा SQL not found, then raise an invalid department. Okay, and when e dot invalid department, अगर आपका वो डिपार्टमेंट नहीं है तो आपको दिखाएगा no such department ID is present. Now check. It is showing you no such department ID is present. So declare v dot department number 500 department ID नहीं है और यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम टेस्टिंग दिया है. एक्सेप्शन का जो नाम है e अंडरस्कोर इनवैलिड डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका एक्सेप्शन का नाम. यहाँ पर एक्सेप्शन कीवर्ड डिपेंड किया गया. अपडेट HR डॉट डिपार्टमेंट set department name equals to v underscore name, where department number id equals to v dot department number. Okay, तो यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट लिखा गया. HR जो डिपार्टमेंट टेबल का हम अपडेट करेंगे. यहाँ पर नेम पास किए और वहाँ पर आईडी भी पास किए. अगर आपका इंफॉर्मेशन नहीं है, if SQL not found, then raise invalid department. अगर आपका एक्सेप्शन मतलब वो डिपार्टमेंट आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पर एक्सेप्शन दिखाएगा. When invalid department मतलब अगर ये एक्सेप्शन अराइज होता है तो आपको क्या मैसेज शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन का नंबर नहीं है ना. तो जो प्रीवियस में क्या होता था, जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन का नंबर हम पास कर रहे थे, ये तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं, यूजर डिफाइन कर रहा है, तो उसका तो कोई एरर कोड डिफाइन करने से तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेज है वो शो करता था. लेकिन यहाँ पर एरर कोड नहीं है, जो यूजर जो एक्सेप्शन डिफाइन करेगा उसमें कोई एरर कोड नहीं होता है, तो क्या मैसेज शो करेगा अगर एक्सेप्शन आता है. तो इन दैट केस इट्स शोइंग यू नो सच डिपार्टमेंट आईडी इज प्रेजेंट. तो ऐसा डिपार्टमेंट आईडी प्रेजेंट नहीं है. ये समझ में आया प्रोग्राम मुस्कान? यस सर, बुझे असला. चला तो क्या शुभम बुझेला? हाँ सर. Propagating exception in a sub block. So how it is working? When a sub block handle an exception, it terminate normally. Sub block means in a begin and end block, another begin and end block is present. So when a sub block handle an exception, it terminate normally. Then control resume in the enclosing block immediately after the sub block end statement. Okay, the control is resume in the enclosing block immediately after the sub block end the statement. However, if a PLSQL raises an exception,
the current block doesn't have a handler for that exception. So when a PLSQL raise an exception, the current block doesn't have a handler for that exception. The exception propagate to the successive enclosing block. Okay, it means what happened when you are defining a exception in a sub block में अगर exception define होता है, अगर वहां पर handle नहीं होता है तो वो main block में चला जाएगा. Okay, until it find a handler, जब तक उसको handler नहीं मिलता है तब तक वो जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वहां पर चला जाएगा. While leaving more general exception handling to the enclosing block. Okay, note that in the example that exception no row integrity, no declare outer block in the inner block. Okay, so first you understand that when a sub block handle an exception, it terminate normally. सब ब्लॉक अगर कोई भी एक्सेप्शन हैंडल करेगा वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा. कंट्रोल रिज्यूम इन द एनक्लोजिंग ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर द सब ब्लॉक एंड स्टेटमेंट. फिर से कंट्रोल कहां पर काम करेगा, सब ब्लॉक का जो स्टेटमेंट एंड हो जाएगा तो फिर जो सब ब्लॉक जिसके अंदर है उसके जो बाहर वाला जो क्वेरी है बिगिन एंड एंड वहां पर काम करेगा. However, PLSQL raises an exception and current block doesn't have the handler for that exception. The exception propagate to the successive enclosing block. Begin and end उसके अंदर और एक begin and end है. Suppose जो inner begin and end है उसमें कोई exception generate हुआ तो आपका जो exception जो inner block में generate हुआ वहां पर handle नहीं हो पाया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, outer block में चला जाएगा. तो आउटर ब्लॉक में उसको अगर स्पेसिफाइड हैंडलर नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा. One advantages of this behavior is that you can enclose the statement that require their own exclusive error handling in their own block while leaving more general exception handling to the enclosing block. तो एक advantages है इसमें that you can enclose the statement that require their own exclusive error handling. तो जो ब्लॉक आप इनर में डिफाइन किए हो उसके अंदर आप एक्सक्लूसिव एक्सेप्शन हैंडलिंग डिफाइन कर सकते हो. मतलब वो जो इनर ब्लॉक के लिए स्पेशली वो एक्सेप्शन हैंडलर रहेगा, फिर आउटर ब्लॉक के लिए और एक एक्सेप्शन हैंडलर रहेगा, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा इधर. Then raise application error procedure. You can use the procedure to issue the user defined error. Okay, you can use this procedure by using of raise application error. This is a procedure. You can use this procedure to issue the user defined error message from the stored program. You can report the error to your application and avoid returning the unhandled exception. Okay, so for handling the unhandled exception means there is no proper exception handler is present if any exception is generated. Okay, so you can report that error to your application and avoid returning the unhandled exception when you are using a raise application error procedure. So it is just like a generic exception. मतलब कोई भी एक्सेप्शन अगर जनरेट होगा तो ए ब्लॉक ए प्रोसीजर अपने आप हैंडल कर लेगा. तो यहाँ पर क्या होगा, कोई ऐसे ऑन हैंडल एरर नहीं बचेगा इधर. For raising an exception, raise application error number, then कौन सा मैसेज आपको पास करना है, एरर आपका ट्रू और फॉल्स है वो डिफाइन करेगा इधर.
तो यहाँ पर ये चेक होगा use the raise application error procedure to communicate a procedure exception interactively by returning the non-standard error code and error message. So by using of raise application error procedure, you can communicate the predefined exception. So raise application error is what? If you want to generating your exception, आप खुद आपका exception generate करना चाहते हो, so that is not belongs to the exception predefined exception class. तो ये जो रेज एप्लीकेशन एरर है ये कम्युनिकेट कर लेगा किसके साथ ना, जो आपका प्री डिफाइन एसक्यूएल एक्सेप्शन है उसके साथ कम्युनिकेट कर लेगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दिया, व्हेन यू पास द एज इज 18 इट इज नॉट ए एरर because it is a valid value, but you have to define according to your application requirement that 18 is a error, so you have to raise an exception by using a raise application error procedure. And here we are using true and false. It is an optional boolean parameter. If true, the error is placed on the stack of the previous error. If false, which is the default value. The error number or the error number you can passing minus 20,000 to minus 20,999. तो इसके अंदर में आप वैल्यू पास कर सकते हो। Range underscore application error, it is used in the two different places. Where it is used? It is used in the executable section, and next it is used in the exception section. It returns the error condition to the user in a manner consistent with the other Oracle server error. So it returns the error condition. It returns the error condition that is used in the other Oracle server error. So how it is used? Delete from employee, where manager ID equals to v.manager. So you are passing any kind of manager code. If SQL dot not found, मतलब अगर आपका जो मैनेजर का वैल्यू जो डिलीट करना चाहते हो अगर आपका नहीं है, तो it is showing you this is not a valid manager. Okay. It's all about this chapter. I'm showing you the other program. We already created table customer. Select star from customers. I'm passing select star from customers.
again I have to create drop table customers. Here I am dropping a table. Now I am creating a table, create table customers. Then I am using here begin and end statement at a time to insert all the code. So now check that all the records, 6 record is inserted. Select star from customers. It is showing you the 6 record. Now I am trying to retrieve a record. So here I am defining a PLSQL code. CID customer ID is 10. So I'm changing here. Is a customer's ID is 10. And customer by giving a ID, it is retrieve the customer name and customer address. So select name, address. It is retrieve a name and address. Name and address retrieve करके दोनों वेरिएबल में स्टोर करेगा. From customers where ID equals to CID, जो ID आप यहाँ पर पास करोगे, तो name address यहाँ पर शो किया. When no data found, ये आपको दिखाएगा no such customer. When others, it's a new error. Here I see that it's showing you the exception as because 10 ID is not present. It's showing you no such customer is present. It's a user defined exception. It is store the record up to 6. We are passing here what 10 value. The 10 value is not present. The 10 value ये टेबल में नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक्सेप्शन शो किया नो सच कस्टमर इज प्रेजेंट. Next program
here I am defining create table message. एक टेबल मैंने पास किया create table message और table is created. So now if I pass select star from ME SSAGES, when I trying to get a record, so there is no record is present, still I am not inserting any record in the message table. Then from where it is inserted, now I am declaring two variable v.ename, which is retrieve the last name from hr.employee, and v.emp underscore salary, which is retrieve the salary from the employee table. So salary by default we are giving us 6,000. Select last name into v underscore ename from hr.employee, where salary equals to 6,000. मतलब जिसका सैलरी 6,000 है उसका लास्ट नेम रिट्राइव करके ये जो v अंडरस्कोर ई नेम में स्टोर करेगा. फिर स्टोर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या करेगा ना, मैसेज टेबल में डाटा स्टोर होगा. एक्सेप्शन, अगर 6,000 का डाटा नहीं है तो मैसेज टेबल में डाटा इंसर्ट होगा. इंसर्ट इनटू मैसेजेस वैल्यू नो एम्प्लॉय विद सैलरी ऑफ 6,000. व्हेन टू मेनी रोज, अगर 6,000 वाला अगर ज्यादा वैल्यू है तो आपको शो करेगा मोर देन वन एम्प्लॉय विद सैलरी इज 6,000. व्हेन अदर एरर, देन आपका ये मैसेज स्टोर हो जाएगा मैसेज टेबल में. सम अदर एरर्स अकर. नाउ वी ट्राई दिस वन. पहले हम देख चुके हैं मैसेज टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं था. इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वन रो इंसर्टेड. अभी देखते हैं क्या दिखाता है. मोर देन वन एम्प्लॉय विद सैलरी 6,000. तो 6,000 जो सैलरी पास किए हैं, मोर देन वन एम्प्लॉय वहां पर है. ओके. So in next class, I'll send you other programs.